Good morning, my dear students and my dear friend. This is Sudhir and welcome you all on today's class. And in this video, we will solve some more word problems from page number 181. Okay. So my target is near about three questions. Let's see. So let's solve the question number 3, and that is Gunjan spent rupees 16.80. That means 16 rupees and 80 paise. Listen carefully, okay. Gunjan spends 16 rupees and 80 paise on newspaper. ठीक है, न्यूज़पेपर में कितना पैसे खर्च हो रहे हैं? 16 rupees and 80 paise. Okay, this is the amount which is spent every week. हर हफ्ते. That means what? The cost of newspaper for 7 days, because the 1 week means what? 1 week means 7 days. Okay, so that is the cost of newspaper for the 7 days. 7 दिन का जो newspaper है 16 rupees और 80 पैसे में आता है. So now we have to find what we have to find. What is the cost of one newspaper? So I already told you that if the cost of many things is given and you want to find out the cost of single thing, so we will divide. Okay, we will divide the quantity by, हम लोग क्या करेंगे? Divide करेंगे. That means repeated subtraction. Okay, so what we will do here? First of all, we have to write the given information in the form of statements. So we can write the statements as, first of all, we will write amount spent amount spent on newspaper. Array amount spent on newspaper is rupees 16.80. That is 16 rupees and 80 paise. Okay, then we will write number of days is equal to, yes, 1 week. 1 week, that is equal to what? 7 days. 7 days. That means for the cost of newspaper for 7 days, 7 दिन का खर्चा is 16 rupees and 80 पैसे. Now we have to find out the cost of one newspaper. तो रोज एक ही तो newspaper आएगा, है ना? So we have to find the cost of one newspaper. We will divide the 16.80 by 7. Okay, so let's divide. So we will divide, but before that we have to write the cost of one newspaper. The cost of one newspaper is equal to, we don't know. So we will leave the space for a few minutes. And now we will divide the 16.80 by 7. So that is 16.80 and this is your 7. So now let's divide. Forget that point for a few minutes. Okay. 7 into 7 to the 14. Can I write 7 to the 14? 7 3 is 21. We cannot write 21 because it is 16. या तो 16 ही है ना? वो ज़्यादा हो जाएगा. तो 7 to the will be 14. We will write the 14. Okay. Now subtract the 14 from 16. Subtract the 14 from 16. You will get 2. Here will be 0. Okay. Now the next digit will come downside. That means this 8 will come downside and this becomes 28. ठीक है. अब चलो 7 से divide करो. 7 3 is 21. 7 4 is 28. Yes, 7 4 is 28. So we will write 7 4 is 28. Now subtract the 28 from 28, you will get 0. And the last digit will also come downside. It is 0. But अभी खत्म नहीं हुआ. We have to solve that 0 also. 7 zeros are 0. And the remainder is 0. So the answer is 240. Okay. This is 240. But it is not a perfect answer. We have to write this dot, that is point, after the two numbers or before the two numbers from that side. Okay. So 1, 2, the answer is 2.40, that is 2 rupees and 40 paise. So we will write here 2 rupees and 40 paisa. You can write the final answer here.
The same final answer you have to write downside. Okay, write down as it is. The cost of one newspaper will be, okay, the cost of one newspaper will be, write down here, will be extra here, will be 2.40. Understood everyone? लिख ही देता हूँ ना. Okay, the cost of one newspaper will be, why will be? Okay, the cost of one newspaper is rupees 2.40. That is your final answer. Okay, okay, so I hope you understand. Quickly note down in your maths notebook. Okay, then we will proceed toward the question number 5th. 4th question is simple, you can solve that one. Okay, 5th and 6th we will solve. Okay, so quickly note down. Okay dear students, so now let's proceed to the question number 5, and the question number 5 is, first of all we have to read the question properly so that we will get the idea about the problems. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करना है, then you are able to collect the information which is given in the problem. Okay, then we will understand what we have to exactly find out. ठीक है, उसमें से क्या हमको फाइंड आउट करना है वो भी हमको समझ में आ जाएगा. एंड द थर्ड वन इज, देन वी विल थिंक हाउ कैन वी फाइंड आउट द आंसर. उसके बाद हम लोग सोच पाएंगे कि हमें ये सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, तो पहले रीड करते हैं, चलो. ठीक है, सो एट द कार्निवल फेस्टिवल, कार्निवल इज अ फेस्टिवल. ओके, बहुत फेस्टिवल आ रहे हैं आजकल, क्या बात है. ओके, ठीक है, हाँ. एट अ कार्निवल राहुल स्पेंट ₹45 ऑन राइड्स, ₹45 ऑन राइड्स. ठीक है, वॉट एवर द राइड इट इज, हो सकता है किसी झूले में बैठा हो, है ना, उस झूले के ऊपर कितने रुपए लग गए, ₹45 इज स्पेंड. ओके, देन ₹137 ऑन द गेम्स. अब गेम खेलते हो कितने रुपीज स्पेंड कितने रुपए खर्च हो गए, ₹137 आर स्पेंड ऑन द गेम्स. ठीक है, राहुल ध्यान से सुनो, हाँ, डोंट लिखने में बिजी मत रहो, डोंट राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड. ठीक है, यू कैन राइट एनी टाइम. ₹45 ही स्पेंड ऑन राइड्स. ठीक है, झूले में ₹45 स्पेंड हो गया. देन ₹137 ऑन गेम्स, गेम्स खेलने में कितने रुपए खर्च हो गए, ₹137 आर स्पेंड ऑन द गेम्स. एंड ₹92.50 ऑन फूड, खाएगा भी ना, है ना. सो ₹92.50 आर स्पेंड ऑन द फूड, खाने पीने में भी खर्च हो गए ₹92.50. ओके, सो दैट इज द खर्चा, दैट मीन्स स्पेंड. ओके, now the next statement, that means next sentence is, if he had ₹300, he had, what is meant by had, this had is using in the past tense, है ना, past tense में यूज करते हैं. that means if he had ₹300, अगर उसके पास ₹300 थे. okay, how much is left over, how much money is left with him. that means what is the question, ध्यान से समझ लो. राहुल हैड ₹300, राहुल के पास ₹300 थे. एंड फ्रॉम दैट ₹300 ही स्पेंड, उस ₹300 में से उसने क्या किया, कुछ अमाउंट को खर्च कर दिया. दैट मीन्स ही स्पेंड ₹45 ऑन राइड, ₹45 राइड में खर्च हो गए. ₹137 आर स्पेंड ऑन द गेम्स एंड ₹92.50 ऑन द फूड. ओके, खाने पीने में खर्च हो चुके हैं, इतने रुपीज खर्च हो गए. नाउ व्हाट इज अ मनी विच इज द, नाउ हाउ मच मनी इज लेफ्ट ओवर विथ हिम, कितने रुपीज अब बच गए हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द टोटल मनी स्पेंड, द टोटल अमाउंट विच इज स्पेंड बाय द राहुल, है ना. पूरा टोटल मिला के कितना खर्चा हुआ, पहले हम लोग वो फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट द स्पेंड मनी विच इज स्पेंड, जो खर्च हो गया उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द टोटल अमाउंट ऑफ मनी. सो यू विल गेट द अमाउंट विच इज लेफ्ट ओवर. फिर से बोल रहा हूं मैं, first of all we will add the total spent, that is the amount which is total. ठीक है, that is ₹45, ₹137 and ₹92.50. then we will add these three quantities, 3 नंबर को जब हम लोग मनीज को हम लोग जब मिलाएंगे, then we will get the total amount which is spent, जो खर्च हो चुके हैं. ठीक है, whatever, मान लो जितना भी आएगा. ठीक है, अब ₹300 था, that means he had ₹300 at the beginning, yes, and the amount spent is, लेट अस सपोज दैट, 2 मिनट के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लो एडिशन 200 आया, आएगा नहीं,
ठीक है, लेकिन मान लो 200 आया, दैट मीन्स व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट द 200 फ्रॉम 300, दैट मीन्स जितना खर्चा हो गया उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैव एट द बिगिनिंग। ओके, सो यू विल गेट द 100 रुपीज इज लेफ्ट ओवर। वैसे ही हम लोग यहाँ पर करेंगे, दैट इज नॉट आंसर, जस्ट आई एम गिविंग द आइडिया। ठीक है, 100 आंसर नहीं है, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा था। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द प्रॉब्लम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, अरे हाँ, टोटल मनी स्पेंड। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द स्टेटमेंट्स, or you can write 3 statements separately or you can write a single statement. ठीक है, 45 rupees on ride, 137 rupees on games and 92 rupees and 50 paise on food. These 3 information is given. You can write 3 statements separately. आप ऐसा लिख सकते हो, the money spent on ride, the money spent on games and the money spent on the food. You can write 3 statements. ठीक है, or you can write a single statement. Rahul spent 45 rupees on ride, 137 on games and this much amount on the food. एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, बट इट शुड बी मीनिंगफुल। ठीक है, तो मैं अभी 3 स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर मनी स्पेंड ऑन राइड्स इज इक्वल टू 45 रुपीज, is equal to rupees 45. Okay, then we will write the statement which is a 137 for rupees 137. Okay, money spent on games, money spent on games is equal to rupees 137 rupees he spent on the games. Okay, now again we have to write a one statement and that is money spent on food. खाना पीने में कितना खर्च कर दिया, अच्छा बहुत खर्चा कर दिया भैया, रुपीज 92.50. Okay, this is the money which is spent over. Now we will write the total money spent, total money spent at Carnival. Carnival में total amount of money, how much money he spent. So we will add these 3 monies. So listen here, how can we add it? ठीक है, तो अच्छा subtract करने के लिए भी जगह चाहिए. It's okay. Just wait a minute. It is visible in camera. Okay, it is visible. हाँ. Now here we will add these 3 numbers. We will add 45. We don't know here. Okay, 45 rupees 00 paise. It is 137 rupees. Okay, there is not a पैसे, तो उसके सामने पॉइंट हमको लगाना है। ठीक है, ध्यान से 137 we have to write 137 rupees, पॉइंट के नीचे बराबर पॉइंट एंड 00 पैसे, and this is a 92 rupees and 50 paisa. When we will add these 3, we will get the total amount which is spent on the carnival. Okay, that is 0, it will be 5, 7 plus 5 is 13, no 12, and here will be 4. Okay, 9 plus 5 will be 14. Okay, the 1 will be here, 4 plus 1 is 5, 9 plus 5 is 14, 15, 16, 17. So we will write 7 over here, फिर से 1 इधर and 2 will be here. So that is a total amount of money spent. Okay, what is this? It is a total amount of money spent on the carnival, in the carnival. Okay, that means carnival festival में कितना रुपीस खर्च हो गया, 200 rupees, sorry 274 rupees and 50 paisa is spent. ठीक है, okay, then what we will write here, we will write here rupees 274 and 50 paise, that is that much amount is spent. इतना तो खर्च हो गया. Now we have to find the total amount which is left over with the Rahul. हाँ, Rahul here. Okay, so what we will do, we will subtract this 274 rupees 50 paise from 300 rupees. So we will write 300 rupees, there is not a paisa, so we will write 0 and 0, write properly. Okay, and 274.50. Now we have to subtract it, so we will write here money left, array left,
left over is equal to what? Now we have to take a borrow. So this become 2, this become 9, 9, 9 and this become 10. Okay. Now no, wrong हो गया भैया, गड़बड़, हर बड़ में गड़बड़ झाली. हाँ, listen here, there is 0, तो there is no need to transfer मत करो, it will be 10. We will write 0 minus 0 is 0, write properly. Okay, now 10 minus 5 will be 5, this is point. 9 minus 4 is 5, okay. 9 minus 7 is, here will be 0, okay, and that is 2. So that is 25 rupees and 50 paise, okay. That much amount is left over with the राहुल. ठीक है, तो अब यहाँ लिख देते हैं ₹25.50 is left over with the Rahul. You can write the final statement, final answer downside in your own language. I hope you understand. Okay, so please quickly note down in your maths notebook. If the time is left, थोड़ा सा अगर time बचा होगा, so we will solve one more question. Otherwise, I will send the PDF. Okay, so please note down in the maths notebook.